नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास है हमारी सेकेंड और टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हिटिंग। ये क्लासेस दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में। ये क्लासेस किन के लिए यूजफुल है? एसएससी जेई, आरआरबी जेई, व्यापम एसई, एमपीपीएससी एसई एंड ऑल टेक्निकल इंजीनियरिंग एग्जाम जैसे गेट, इसरो, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ईटीसी। ठीक है। इससे पहले कि आपने फर्स्ट क्लास अगर नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फॉर आर्क हिटिंग द इलेक्ट्रोड आर मेड ऑफ। जब हम आर्क हिटिंग करते हैं तो द इलेक्ट्रोड होते हैं वो मेड ऑफ किसके बने होते हैं? ऑप्शन है कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी ACSR कंडक्टर। तो ऑप्शन सी ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई इंपोर्टेंस इन केस ऑफ इंडक्टिंग हीटिंग? विच ऑफ द फॉलोइंग, जो आपको नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हाई इंपोर्टेंस, सबसे अधिक इंपोर्टेंस किसका है इंडक्टिंग हीटिंग में? तो ऑप्शन है वोल्टेज, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी करंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऑप्शन बी। याद रहेगा। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग इज आल्सो कॉल्ड, जो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग कहलाती है और हमारे टाइप राइटर द्वारा मिसप्रिंट है तो ये हीटिंग क्या कहलाता है? ऑप्शन है वॉल्यूम हीटिंग, ऑप्शन बी इंफ्रारेड हीटिंग, ऑप्शन सी सरफेस हीटिंग, ऑप्शन डी एडी करंट हीटिंग। तो ऑप्शन ए वॉल्यूम हीटिंग, हीटिंग हीटिंग। तो ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, furnace used for cremation used, furnace used for cremation use। ऑप्शन है dielectric heating, ऑप्शन बी arc heating, ऑप्शन सी resistance heating, ऑप्शन डी induction heating। तो ऑप्शन सी resistance heating is the correct answer of question number 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। which of the following will happen if the thickness of refractory wall of furnace is increased? ऑप्शन है energy consumption will decrease, ऑप्शन बी temperature inside the furnace will fall, ऑप्शन सी temperature on the outer surface of furnace walls will drop, ऑप्शन डी heat loss through furnace wall will increase। तो ऑप्शन सी। ठीक है, temperature on the outer surface walls will drop is the correct answer of question number 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Water is decomposed into hydrogen and oxygen by means of an electric current by the method of option A, electrolysis, option B electric heating, option C electroplating, option D none of the above। तो option A electrolysis is the correct answer of question number 6। Next question, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस? जो आपकी इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस होती है उसका प्रिंसिपल क्या है, वो क्या कहलाता है? ठीक है। ऑप्शन है न्यूक्लियर हीटिंग प्रिंसिपल, ऑप्शन बी थर्मल आयरन रिलीज प्रिंसिपल, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस हीटिंग प्रिंसिपल, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following appliance is the heating effect used? Option A electric motor, option B transformer, option C electric furnace, option D generators। So option C is the correct answer of question number 8, electric furnace, electric furnace। Next question, in which of the following appliance does the heating effect current appear as an undesirable effect? Option A immersion heater, option B electric iron, option C vacuum cleaner, option D electric oven। तो ऑप्शन सी वैक्यूम क्लीनर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। which of the following does not use heating effect of electric current? ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फर्नेस, ऑप्शन बी गैसर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक आयरन, ऑप्शन डी वैक्यूम क्लीनर। तो ऑप्शन डी वैक्यूम क्लीनर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11।
The method suitable for heating of conducting medium is option A induction heating, option B indirect heating, option C eddy current heating, option D radiant heating. The option A induction heating is the correct answer of question number 11. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 12. According to Fuse law, the current carrying capacity varies as option A diameter, option B diameter 1.5, option C diameter 0.5, option D diameter first, option B diameter is the correct answer of question number 12. Next question. In which type of heating following factors need to be considered? जो भी आपको following option दिए हैं इसमें से कंसाइडर के लिए कौन सा फैक्टर जरूरी है हीटिंग? तो इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी रेडिएंट फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी डाइलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी इंडक्टेंस फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13, इंडक्टेंस फ्रीक्वेंसी। याद रहेगा, इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस पर, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर या क्लास चाहते हैं आप तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस we will provide as soon as possible in this channel, of course free of cost. Question number 14. Cooling time constant is denoted as option A tau, option B lux, option C Fahrenheit, option D degree Celsius. Option A tau is the correct answer of question number 14. Next question. Method of heating in which of supply circuit is likely to have a leading power factor? Option A inductance heating, option B dielectric heating, option C resistance heating, option D dielectric arc. So option B dielectric heating is the correct answer of question number 15. Next question. The temperature inside a furnace is usually measured by. The temperature inside a furnace usually measured by. Option A mercury thermometer, option B optical pyrometer, option C alcohol thermometer, option D any of the options is correct. Option B optical pyrometer is the correct answer of question number 16. Next question. Sorry. The process of heat transfer मतलब जब heat transfer होती है तो वो process the re-entry of satellites and missiles at very high speed at not atmosphere is known as ablation, radiation, viscous और इरिडेशन क्या कहलाता है? एब्लेशन। वेरी गुड। जिनका आंसर आ रहा नहीं आ रहा वो इस क्लास को दोबारा से देखिए, आने लगेगा। प्रैक्टिस मोर परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग इज यूज्ड इन। जब डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग हम डायरेक्ट यूज किसमें करते हैं? इलेक्ट्रोड बॉयलर, सॉल्ट बॉथ फर्नेस, रेजिस्टेंस और ऑल ऑप्शन। तो किसमें करते हैं हम? ऑल ऑप्शन, मतलब इलेक्ट्रोड में भी करेंगे, सॉल्ट बॉथ में भी करेंगे और रेजिस्टेंस में भी करेंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन। The method suitable for heating of conducting medium is option A inductance heating, option B indirect arc heating, option C eddy current heating, option D radiant heating. क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एडी करंट हीटिंग इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीट इज ट्रांसफर्ड इन एयर एंड वाटर बाय। हीट ट्रांसफर होती है एयर और वाटर बाय किसके द्वारा? रेडिएशन ओनली, ऑप्शन बी राइदर कंडक्शन, ऑप्शन सी कंडक्शन ओनली, ऑप्शन डी कन्वेक्शन ओनली। तो ऑप्शन डी कन्वेक्शन ओनली इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following electric heaters suffers from pinching effect? Core type induction furnace, option B electric heater, option C coreless induction furnace, option D dielectric heating, option A core type inductance furnace is the correct answer of question number 21. Next question. Question number 22. Direct conversion of heat into electric energy is done by option A fuel cells, option B stem cells, option C solar cells, option D MHD generators. Option D MHD generators is the correct answer of question number 22. The heating element must process. The heating element must process. Option A low melting point, option B
withstand the required temperature, option C high temperature, option D high resistivity. तो ऑप्शन बी withstand the required temperature is the correct answer of question number 23, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन. The softering temperature of hard driving copper electrode is option A 500 degrees Celsius, option B 300, option C 1000, option D 130. तो ऑप्शन है 500 is the correct answer of question number 24. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट. मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिएगा. बाय बाय.